Dear 10th class students, let we today study another poem from the poetry section of your textbook, Snowdrop, written by Hughes. First of all, let we have a brief introduction of the poem. The poem is written by Edward James Hughes. In this poem, the poet presents a tough and cruel image of nature. The poem portrays the toughness and harshness of a hard winter. The poet expresses that the winter has shrunk the world and many creatures are on the verge of death. ये पोइम लिखी है एडवर्ड जेम्स ह्यूज ने, जिन्हें आम तौर पे टेड ह्यूज भी कहा जाता है। इस पोइम में उन्होंने विंटर के या हम कहें कुदरत की सख्त इमेज को पेश किया है। ये पोइम हमें विंटर की हार्शनेस को बयान करती है, विंटर की सख्तियों को बयान करती है कि जब एक हार्ड विंटर होता है तो वो कितनी सख्तियां लोगों पे बर्पा करता है। पोइट ने एक्सप्रेस किया है, पोइट इजहार करते हैं कि विंटर ने किस तरह दुनिया को सुखा के रखा है और बहुत सारी क्रिएचर्स जो है, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वो मौत के दहाने खड़े हैं विंटर की, मौसमी सरमा की सख्तियों की वजह से। Now about the poet. Edward James Hughes was born on August 17, 1930 in Yorkshire, England. The accounts of First World War by his father, William James, made a permanent impression on the memory of Ted Hughes. Later, he reflected the cruelty of war, death, and nature in his poems. Hughes was born in a rural area. He developed love for animals and birds. This fondness in animals remained with him from childhood throughout life. So he subsequently wrote a large number of animal poems. Hughes was married to Sylvia Plath, a famous poetess. Hughes passed away in October 28, 1998. एडवर्ड जेम्स ह्यूज पैदा हुए 17 अगस्त 1930 को यॉर्कशायर, इंग्लैंड में। उसके फादर ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के मुतालिक अपने ख्यालात, अपना अकाउंट लिखा था, उसका टेड ह्यूज पे एक अच्छा खासा, या यूं कहिए कि एक परमानेंट इम्प्रेशन पड़ा और लेटर ऑन उन्होंने इस इम्प्रेशन को रिफ्लेक्ट किया थ्रू आउट हिज पोइट्री। उन्होंने अपनी पोइट्री में वार, डेथ और कुदरत की जो क्रुअल्टीज है, इन सबके जो मजालिम है लोगों पे, इनको बयान किया या रिफ्लेक्ट किया। ह्यूज पैदा हुए रूरल एरिया में, देहाती इलाके में पैदा हुए। इसकी वजह से उनमें एनिमल्स के लिए, परिंदों के लिए लव डेवलप हो गया, प्यार था उनका, उनकी फॉन्डनेस डेवलप हो गई। ये फॉन्डनेस एनिमल्स के लिए जो उनके दिल में थी, ये बचपन से लेके पूरी जिंदगी उनके साथ रही, यानी उन्हें ये फॉन्डनेस हमेशा रही। एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ उनका लगाव उनकी पूरी जिंदगी रहा। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी पोएम्स, एनिमल पोएम्स लिखी, यानी जिनमें उन्होंने एनिमल्स को या यूं नेचर को या बर्ड्स को ब्यूटिफाई किया है या उनके मुतालिक लिखा है। ह्यूज ने शादी की सिल्विया प्लाथ से, जो एक फेमस मशहूर शायरा थी। ह्यूज इंतकाल कर गए 28 अक्टूबर 1998 को। Dear students, now let we have a loud reading of the poem. Shall we? Yes.
Now is the globe shrunk tight round the mouse's dulled wintering heart? Weasel and crow, as if molded in brass, move through an outer darkness not in their minds. Now, the summary of the poem. The poem has been written by Edward James Hughes. The poem depicts the harsh and cruel image of winter. The poet describes the life of various creatures affected by extreme winter. Finally, he speaks of Snowdrop that even blooms in the harsh winter. He shows his regard for Snowdrop that sprouts through the frosty cover of the earth's surface. ये पोइम एडवर्ड जेम्स ह्यूज ने लिखी है। ये पोइम हमें दिखाती है मौसमी सरमा की हार्श और क्रूअल इमेज को। ये पोइम दिखाती है कि एक सख्त सरमा कितनी तकालीफ डालता है लोगों पर। इस पोइम में शायर ने बहुत सारी क्रिएचर्स का मेंशन किया है, जैसे वीजल है या माउस है, जिनका विंटर की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा है उन पर। लास्ट में वो मेंशन करता है स्नोड्रॉप का, जो इतने सख्त तरीन मौसम में भी अपने आप को ब्लूम कर पाता है। उन्होंने स्नोड्रॉप की तारीफ की है जो फ्रॉस्टी कवर से निकलकर, यानी यकबस्ता ज़मीन से निकलकर अपने आप को उगा पाता है या अपने आप को जिंदा रख पाता है। The first stanza shows how cold has restricted the movement of different active creatures. He makes mention of mouse, crows, and weasels. It seems as if days are converted into nights because everything seems to be dozing and lifeless. पहले स्टंजा में शायर ने दिखाया है कि किस तरह सर्दी ने, मौसमी सरमा की सर्दियों ने किस तरह पूरी दुनिया को सुकड़ा के रखा है, किस तरह हर एक क्रिएचर जो है वो इनएक्टिव हो गई है। वो मेंशन करता है माउस का, क्रोज का, वीजल्स का। ये कुछ ऐसी क्रिएचर्स है जो बहुत ही एक्टिव रहती है विंटर से पहले। ऐसे लगता है जैसे दिन भी रातों में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि हर एक चीज हमें बेजान सी लगती है। The poor creatures are not in their right mind due to the extreme cold. They cannot think what to do or where to find any shelter. सारी creatures, सारी जो जानदार चीज़ें हैं वो कुछ फैसला ही नहीं कर पाती है। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स हैं जिन्हें ग़िज़ा की तलाश में बाहर जाने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो फैसला ही नहीं कर पाते हैं कि जाएं बाहर कि ना जाए, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं बाहर जाके हमें मौत ना हो जाए। वो दूसरी क्रिएचर्स को मरा हुआ देखते हुए बाहर जाने के लिए फैसला ही नहीं कर पाते हैं कि जाएं कि ना जाएं। In the next stanza, the poet mentions of a flower which blooms in such harsh winter and makes its way through the frosty earth. It blooms like the stars of a winter season, which shine without any consideration of cold or hot season. Though both of the stars and snowdrop fail to touch the beholder's heart, snowdrop blooms with its dangling flowers, which make a feel that its small head is made of metal. दूसरे स्टेंजा में शायर ने जिक्र किया एक फ्लावर का जो इवन हार्श विंटर में
सख्त सरमा के मौसम में भी ब्लूम होता है, जो अपने आप को उगाता है या बस्ता से। हर तरफ फ्रॉस्ट ही फ्रॉस्ट होता है, लेकिन वो फ्रॉस्ट को चैलेंज दे के बाहर निकलता है, स्प्राउट करता है। ये फूल ब्लूम करता है लाइक द स्टार्स ऑफ अ विंटर सीजन। जिस तरह विंटर में जो स्टार्स है वो शाइन होते हैं, चाहे कितना ही मौसम खराब हो, कितनी ही सर्दी हो। इसी तरह जो स्नो ड्रॉप है वो भी अगरचे उसकी जो फ्लावर्स हैं वो झुके हुए होते हैं बर्फ की वजह से, सर्दी की वजह से, लेकिन वो इस तरह अपने आप को मजबूत करके रखता है। ऐसे लगता है जैसे इसका सर एक दांत की तरह है, जिस तरह दांत मजबूत होता है इसी तरह ब्लो स्नो ड्रॉप के जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो अपने आप को स्टैंड फर्म रखते हैं। Now the central idea of the poem. Life is full of struggles and hardships. The person who stands firm against the challenges comes out to be successful. Nature uses various processes to teach the humans the lesson of success by determination and positive approach. जिंदगी आजमाइशों से सख्तियों से भरी हुई है। हमेशा ज़िंदगी में हमें बहुत सी तरह की सख्तियाँ, आजमाइशाँ, मुसीबतें देखनी पड़ती है, लेकिन वही इंसान कामयाब होके निकलता है जो मजबूत रहे, जो सब्र करे। कुदरत हमें अपनी नेचुरल प्रोसेस के दौरान सिखाती रहती है ये चीज़ें कि जो इंसान डिटरमिनेड रहा, जो पुरुमीद रहा, जो चैलेंजेस के सामने डट कर खड़ा रहा, वही हमेशा कामयाब होकर निकल पाया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा इस पोएम को और आपने ये पुख्ता अहद किया होगा अपने साथ कि हम भी वी विल आल्सो डेवलप द वैल्यू ऑफ determination in ourselves. If a snowdrop, being a small flowering plant, can stand firm against the challenges, why not we? Uh, I will come up with next video for the next poem. Till then, goodbye. Thank you so much.